फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ऑब्स्टिक एंड गायनिकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? ऑब्स्टिक एंड गायनिकोलॉजी, ओबीजी। ठीक है। एनाटोमी फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं? ऑर्गन्स इन इंग्लैंड, ऑर्गन्स इंग्लैंड इन copulation, organs England in copulation, fertilization, growth and development of the fetus, and delivery are reproductive organ in female. These organs are divided into external genital, internal genital, accessory रिस्पायरेटरी ऑर्गन। सबसे पहला है एक्सटर्नल जेनाइटली। कौन कौन सा होता है? बाहर की तरफ जो है वल्वा और प्यूपेनियम। प्यूपेरियम। और इसके अंदर अब कौन कौन है? वल्वा और प्यूपेरियम के अंदर तो मोस प्यूबिस, वल्वा पूरा पार्ट होता है। अब उसमें है मोस प्यूबिस। इट इज़ ए पैड ऑफ द सबक्यूटेनियस adipose tissue anterior superior to the pubic symphysis, labia majora, subcutaneous tissue, labia दोनों साइड में क्या होती है? लेविया मेजोरा सबक्यूटेनियस। ये किसका बना होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू कवरिंग लेविया मेजोरा, सबक्यूटेनियस टिश्यू कवरिंग द वल्वा। सबक्यूटेनियस टिश्यू कवरिंग द वल्वा, द साइड वल्वा इट द साइड ऑफ homologous to the scrotum in male। वल्वा किसके होता है? homologous। लेविया मेजोरा सबक्यूटेनियस टिश्यू कवरिंग इन द वल्वा एट द साइड। homologous कौन होता है इसके? स्कोटम इन मेल। मेल में तो क्या होता है? स्कोटम। और फीमेल में हो जाएगा लेविया मेजोरा, वल्वा के उसमें हो जाएगा स्कटम। लेविया माइनोरा, पतला फोल्ड, थिन फोल्ड ऑफ स्किन विदाउट फैट, लोकेटेड इनसाइड द लेविया मेजोरा, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रियल कनेक्टिव टिश्यू, इरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू, homologous टू पेनिस यूरेथ्रा। homologous ये किसके होता है? homologous टू पेनिस यूरेथ्रा। लेविया मेजोरा किसके होता है? यूरेथ्रा के। homologous। and part of the skin of penis is male। फिर है क्लाइटोरिस, स्मॉल इलेक्टियल body is located anterior to vulva, conducting or glass body and to cure homologous to the penis in the male। जो कवरिंग होती है पेनिस की ऊपर वाली, उसकी तरह ही क्लाइटोरिस होता है महिलाओं में। स्मॉल होता है ये, एंटीरियर वल्वा की साइड लोकेटेड होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, वेस्टिब्यूल।
इट इज़ ए ट्राइएंगुलर शेप, यानी कि ट्राइएंगुलर शेप, और इसमें कितनी होती है, 4 ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइना, ओरिफिस एंड लेम्यून। यूरेथ्रा ओपनिंग में क्या क्या हो गया है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइना, ओरिफिस एंड हाइमन। वजाइना में क्या होता है, ओरिफिस होता है और हाइमन होता है। ओपनिंग ऑफ द बारूथियन ग्लैंड, और जो यूट्रस ओपनिंग होती है उसकी साइड में क्या होती है, बारूथियन डक्स की ओपनिंग होती है और स्केंस ग्लैंड होती है। पेरिनियम, muscles and tissue located between the vaginal opening and anal canal. Perineum, muscles and tissue located between the vaginal opening and anal canal. Internal genital. Vagina consists the cervix to the external genital. जो vagina होती है वो किससे होती है, vagina consists in the cervix to external genital. It is located between rectum, ये कहाँ से located होती है, it is located between rectum and bladder. जो rectum और bladder होता है उससे ये 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। It is widest in upper part and narrowest introvest. इसमें क्या होता है, it is widest, क्या होता है, widest. It is widest upper part and narrowest it introverts. From puberty vagina pH कितनी होती है, 4 से 5 pH. Become of acidic lactic acid produced by Dexler bacillus. Cervix. It connected the vagina with the main body of the uterus. The cervix is composed of 2 regions. The endocervix is proximal and inner part of the cervix. It is lined by the small columnar epithelium, muscles scanning. The electrocervic position. The electrocervic position of the cervix project in the vagina. It is lined stratified equipus non cretinized epithelium से बनी हुई होती है। फंक्शन क्या होता है, passage of the sperm into the uterine cavity. Passage of the sperm into uterine cavity prevent uterine cavity from bacteria incision by prevent shedding of the invasion by shedding of the endometrium, thick cervical mucus and narrow external os. Blood supply. Descending branch of the uterus artery supply and cervix and vagina. मतलब यूट्रस आर्टरी सप्लाई करती है किसको, सर्विक्स को और वजाइना को। नर्वस सप्लाई कौन करता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
सिंपैथेटिक नर्व, जो सिंपैथेटिक नर्व होती है नर्व सप्लाई में, सिंपैथेटिक नर्व फ्रॉम द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक plexus T10 L1 supply the uterus and cervix. The Podaneal nerve S2 3 or 4 S2 3 or 4 supplies the vagina and pelvic outlet. Fallopian tube, uterus tube, oviduct. These are the period. These are the paired. Sorry. Fallopian tube क्या है, paired में होती है. These are the paired structure measuring 10 centimeter. Measuring in 10 centimeter. It is a 4-part. Intraperular, interstitial, isthmus, ampulla और infundibulum. इनके फंक्शन क्या होते हैं? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, साइड ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड हेल्प इन द सर्वियल ऑफ जाइगोट बाई द secretions ovaries. The female gonads consist of the two ovary, one each side of the uterus. Each ovary is approximately 3 to 5 centimeter long, 2 से 3 centimeter wide and 1 से 3 centimeter thick in the menstrual year. The ovary is attached to the board ligament by the mesovarium. The ovary is composed of medulla and cortex and covered with genital epithelium. Function: oogenesis, formation of the mature ovum from the follicles into the pelvic cavity. Ovulation, expulsion of the menstruate ovum from Grappian follicles into the fibrate end of the fallopian tube. Secretion of the hormone estrogen and progesterone. Estrogen secreted under the influence of FSH and drug promotes the development and maintain of female reproductive structure, female secondary characteristics, and breathe. It is also increased protein and anabolism and stimulated long bone classification. Progesterone secrete under the infusion of LH and drug with estrogen to prepare endometrium for implantation of fertilized ovum. It inhibits uterine contraction during pregnancy and prepare mammary gland to secrete milk. Uterus is a P-shaped childbearing organ located in लेजर पेल्विक. पोजीशन क्या होती है? इंट्रोवर्टेड एंड इंट्रोफ्लेक्स्ड. क्या होती है? इंट्रोवर्टेड एंड इंट्रोफ्लेक्स. वेट होता है 50 से 80 ग्राम. शेप ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज पायरिफॉर्म. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस बिकम globular at 12 weeks. Uterus is about 7.5 centimeter length, 5 centimeter wide. It upper part upper part and near 2.5 centimeter thickness in adult, 7.5 into 5 in 2.5. Peritoneal fold present behind the uterus is called patches of Douglas. Uterine wall is composed of
composed of three layers: perimetrium, outermost layer, uh, perimeterium. यूट्रस की 3 लेयर होती है, कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? मिडल लेयर है। और पेरीमेट्रियम बाहर वाली लेयर है। और इंडोमेट्रियम innermost mucosal layer of the uterus. Thickness changes during the menstrual cycle. The uterus is divided into पार्ट होते हैं बॉडी. The large upper 2/3 part, pear shape part, cervix, a small lower 1/3 cylinder part. The junction between the body and cervix is called isthmus. Ligaments support uterus. Primary support round ligament, uterosacral, transverse cervical, pubocervical. Fallopian tube, uterine tube. Fallopian uterus tube are approximately 10 cm, usually 7 to 12 cm in length, connecting the ovary to the uterus. ओवा या फिर एक सेल आर carried to the uterus through the fallopian tube. Following ovulation, ampulla part of the tube is site of the fertilization of ova with sperm. Fallopian tube are divided into 4 parts. Interstitial portion, intradermal part 1.25 cm long and lined with the wall of the uterus. It lemon in 1 mm wide. Isthmus adjoint uterus extend for 3-4 cm of the uterus. Ampulla central portion, wide portion where fertilization usually occur. It is a 5 cm long ampulla in the largest and longest portion of the tube. Infundibulum finally safe, final safe, final safe lateral end of the fallopian tube that overlead the ovary. Cervical several finger-like projection, long finger-like process. Inland elongates to areas of the infundibulum, scaneous fibri. Breast, they breast क्या है? These are accessory reproductive organ located. There are accessory reproductive organ bilaterally in female. It help in लैक्टेशन. चाइल्ड बर्थ में क्या करते हैं? लैक्टेशन में काम आती है. और ममेरी ग्लैंड में क्या होते हैं? ब्रेस्ट, द ममेरी ग्लैंड और ब्रेस्ट आर एक्यूरली मॉडिफाइड. किसके मॉडिफाइड है ये? ब्रेस्ट. सबेसियस ग्लैंड के ममेरी ग्लैंड आर द एपोक्रेटियल ग्लैंड. ममेरी ग्लैंड आर द एपोक्रेटेड ग्लैंड. इट इज ए मैडम ऑफ द 15 से 20 लोब्यूल्स ऑफ गैलुडर सेल imbibed in fat. Lobules are separated by fibrous spata. Each lobule drained by the lactiform ducts on the nipple. The pigment area surrounding nipple is known as, उसको क्या बोलेंगे हम? एल्यूला. Mentomeris tuberculous are small glands around the nipple of the alveolar. Blood supply. Axillary artery, internal thoracic, internal memories artery, intercostal artery, thala.